firstly, on the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir only, there are more than a dozen people who've been killed. A lot of human rights violations. Also, there's a long march that's happening from Kotli to Muzaffarabad. So what is the Indian government's reaction to the subjugation that's happening there? Second, recently India won the Asia Cup match. And we had Mohsin Naqvi, the interior minister, refusing to give the trophy to the Indian cricket team. How does India look at it? Will India diplomatically raise the issue somehow with Pakistan? We have seen reports on protests in several areas of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, including brutalities by Pakistani forces on innocent civilians. We believe that it is a natural consequence of Pakistan's oppressive approach and systemic plundering of resources from these territories, which remain under its forcible and illegal occupation. Pakistan must be held accountable for its horrific human rights violations. हमने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्ज़ा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। मधुरेंद्र, इससे आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। प्रणय, आपका सवाल भी इसी के इर्द गिर्द था। जहाँ तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सवाल है, ये भारत के अभिन्न अंग है, रहेंगे ही, हमेशा से रहें। वहाँ के ये जो क्षेत्र है हमारा अभिन्न अंग है। हाँ, तो इसमें जहाँ तक आपका सवाल बिश्नोई गैंग को लेके है, देखिए अभी हाल ही में 18 तारीख को हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मुलाकात कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से हुई थी। इसके बारे में मैंने आप लोगों को अवगत कराया था। दोनों पक्षों के बीच में अच्छी बातचीत हुई कि किस प्रकार से द्विपक्षीय मुद्दों पर, खासकर आतंकवाद के खिलाफ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ दोनों देश काम कर सकते हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से जो सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच में चल रहा है उस पर और मजबूती कैसे लाया जा सकता है। इस मुद्दे पर और इन सभी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में लगातार संपर्क बना हुआ है। The National Security Advisor had a meeting with National Security and Intelligence Advisor of Canada, Ms. Nathalie Drouin, on 18th of September 2025. I had given you details of this particular meeting, as also there was a press release, if I am not wrong. Both sides had held productive discussions as to how we can strengthen bilateral cooperation, especially in the areas of counterterrorism, transnational organized crime, and information or intelligence exchanges. They agreed to strengthen security cooperation and further enforce existing mechanisms of engagement. Both sides remain in touch on all these issues. Aditya, on your question on Pakistan-occupied Kashmir, I have already answered it. On the question of regarding Asia Cup, I think it's a question which you must take to BCCI. They would be in a better position to answer. Sahil, your question regarding some of the allegations that were made in Bangladesh, we categorically reject these false and baseless allegations. The interim government of Bangladesh, as you are aware, and we've spoken about it on several occasions, is unable to maintain law and order situation in the country and has this habit of routinely trying to shift the blame elsewhere. It would do well for them to introspect and conduct serious
investigations into the action of local extremists committing violence, arson and land grab against the minority communities in the Chittagong Hill Tract. जो कुछ बयान बांग्लादेश की तरफ से आया था, ये बिल्कुल निराधार है और हम इसको खारिज करते हैं। अंतरिम सरकार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि वहाँ पर कानून व्यवस्था को सुरक्षित करने में, संभालने में कमी रही है उनकी तरफ से, और जब भी ऐसा होता है तो देखा गया है कि वो दूसरे के ऊपर ये दोष ठहराते हैं। हमारा ये मानना है कि उनकी तरफ से कुछ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, और जो लोग इसके पीछे वहाँ हिंसा करने में और भी वारदातें जो वहाँ होती है, जबरन ज़मीन दखल करने के पीछे जो भी लोग हैं, जो भी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सब जिस क्राइम की मैंने बात की, हिंसा की बात की, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स में, उनके खिलाफ होता रहा है। $25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। For the good of our nation, let's work together and let's truly make America great again. The fastest news breaks. Requested PM saying that look, you will have to speak to Putin and to Zelensky. The biggest news makers. The relationship with India is probably the most important bilateral relationship the U.S. will have for the rest of this century. The capital delivered quite an election result today. Expert analysis. The million-dollar question today is how to stop this dance of death. Ground reports. I'm standing at the crossroad of the Kumbh Mela. Behind me are more than 100 entry ghats. Long-form interviews. Exclusionary politics is reflected in Manipur case as well. You don't bother because this is a small state. Deep dive into burning issues. It's often said DRC could be the richest country in the whole world. It's because of what sits underneath. Why exactly did the US topple the Sheikh Hasina government? HD videos. We don't just break news, we break it down.